नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो है हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो हाइड्रोलॉजी इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट इज़ हाइड्रोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जैसा कि आप ये सोचेंगे कि हाइड्रोलॉजी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों मैं पढ़ रहा हूँ और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं एंड आप 10th-12th में भी हैं तो आपको हाइड्रोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है। Or like what is the application of this hydrology, like what is the need to this word, like word को क्या need है इस हाइड्रोलॉजी की, क्यों जानना है। आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ कि आप एक टर्म सुने होंगे जिसका नाम है वाटर साइकिल। ओके, दिस इज ए बेसिक, वेरी बेसिक टर्म जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों पढ़ना है, क्यों जानना है। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको जान लेना चाहिए कि आपको ये पता है कि पूरे वर्ल्ड में एटमॉस्फेयर से मीन्स आसमान से कुछ वाटर ज़मीन पे आता है। वो किसी भी फॉर्म में आता है। लाइक इन इंडिया, इन नॉर्दर्न इंडिया, इन सदर्न इंडिया, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। जैसा कि आप जानते हैं रेनफॉल बारिश होती है, बारिश के फॉर्म में जो है ज़मीन पे आता है। इसी तरह से स्नोफॉल के फॉर्म में, ड्यू के फॉर्म में, like in there lots of forms have this type like in this is the term is precipitation basically. So these are the forms of precipitation, like the ppt means the water particle came from atmosphere to the ground is called precipitation. These are the forms of precipitation. Can you tell me कि रिवर में पानी कहाँ से आता है, लाइक रिवर्स में पानी कहाँ से आता है, फिर ये पानी जो है कहाँ जाता है, रिवर्स से होते हुए सी ओशियन में जाता है, फिर ओशियन से कहाँ जाता है। ओके, ओशियन से कहेंगे आप ओशियन में रहता है, बट एवरी डे रिवर का वाटर जो है क्या मिलता है, ओशियन में जाके मिलता है। ठीक है, और उस ओशियन में मिलने के बाद जो है वो क्या, ओशियन का लेवल बढ़ना चाहिए हर साल, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओशियन का लेवल, सी का लेवल जो है बढ़ना चाहिए, रिवर आके इसमें मिलती है, तो क्या होना चाहिए कि सी का लेवल बढ़ते रहना चाहिए डे बाय डे, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। इससे क्या होता है, वाटर जो है इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, वेपराइज होता रहता है, समझ रहे हैं, वाष्पीकरण होता रहता है इसका। जिससे क्या होता है कि रिवर का लेवल जो है लाइक वाष्पीकरण जो है, दिस इज आल्सो ये लाइक कंपोनेंट ऑफ वाटर साइकिल। मीन्स हमारा कहना है कि हमें इसको क्यों पढ़ना है, क्यों जानना है कि कितना पानी जमीन, आसमान से जमीन पे आया। ओके, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। उसके बाद वो पानी जमीन पे आने के बाद आफ्टर लाइक एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट होने के बाद वो कहाँ कहाँ गया। ओके, एंड जो जमीन पे गिरा, ऑन द अर्थ सरफेस जो गिरा, वो गिरने के बाद उसके बाद उसका क्या क्या हुआ। कुछ वाटर जो है जमीन के नीचे जाता है, कुछ जो है इवेपोरेट हो जाता है, कोई पॉन्ड है उसमें कुछ वाटर जो है जाता है, लाइक डायरेक्ट जो पॉन्ड में आएगा पॉन्ड में रुक जाएगा। कुछ वाटर जो ज़मीन पे आता है, एंड जो ज़मीन से नीचे जाता है उसकी कैपेसिटी को कंप्लीट करने के बाद वाटर जो है क्या होता है, उससे ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे फ्लो होने लगता है, और सरफेस पे, ग्राउंड पे क्या होता है, फ्लो होने लगता है। उसको बोलते हैं हम क्या, उसको रन ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ। क्या होता है वो, धीरे धीरे रन ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ, वो क्या होता है कि मूव करने लगता है। तो मूव किस तरफ करेगा वो, बेसिकली किस तरफ मूव करेगा, जिधर उसको क्या मिलेगा, उसको स्लोप मिलेगा। ठीक है, स्लोप के थ्रू वो जो है मूव करते करते तो रिवर में जाके मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारी रिवर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल या सिर्फ और सिर्फ मानसूनल रिवर्स होती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग they got the flow, they got the supply during the monsoon only. Okay, the Himalayan rivers are different, they got the supply, few supply from the Himalayas. But maximum river in India are those rivers which are in that category, which got, who got the supply from rainfall only or runoff only. After going to a river, it travels and did the infiltration and everything, evaporation as well takes place in the river, and after that it merges to the layer, to the ocean or sea.
Okay, so this is whole cycle is called atmospheric cycle, sorry, water cycle and hydrological cycle. So this is not only thing which you are going to learn in hydrology. Okay, so related to river, water, and everything you want, you we are going to learn, like if rainfall is too much, let's change the pen. If rainfall is too much, okay, means rainfall is taking place, and infiltration become its capacity is completed, and it is become steady. It goes down with a constant velocity, like this much, this called infiltration capacity or filtration rate. So after that, if precipitation is continue, then water will become first it start to flow with the slope. But if the रेनफॉल इज टू मच, ज़्यादा हो रहा है और वो रिवर में आके मिल रहा है, और रिवर की कैपेसिटी ये है, ठीक है, तो रिवर में मिलते मिलते अगर रेनफॉल होता रह रहा है तो क्या होगा कि इस ओवरफ्लो करने लगेगा, रिवर जो है अपनी बैंक को जो है ओवरटॉप करेगी। जब रिवर अपनी बैंक को ओवरटॉप करेगी, जैसे इलाहाबाद में फ्लड आ जाता है, लाइक सलोरी एंड ऑल रीजन जो है, या दिल्ली में यमुना जब फ्लडेड होती है, तो जो लो लाइंग एरिया है, जो दिल्ली में जो लो लाइंग एरिया है उसको क्या कर देती है, फ्लडेड करने लगती है। सो क्या होता है कि धीरे धीरे जो है जो भी लो लाइंग एरिया है उसको जो है फ्लडेड करने लगता है वो रेनफॉल। सो वी विल आल्सो लर्न कि फ्लड क्या होता है। ओके, फ्लड आता कैसे है, और हम फ्लड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नॉट वी कांट कंट्रोल इट, वी कैन मिटिगेट इट। तो मीन्स हम इसको कैसे जो है मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं इसके पीक को, एंड एवरीथिंग वी विल लर्न इन दिस हाइड्रोलॉजी। ओके, so and many more things we are going to learn here, if we want to construct any bridge, any dam, anything, the structure which is related to water, river, ocean, or rainfall, we have to learn this hydrology. Okay, so in the hydrology you will get, like if you want to, like suppose this is a river, okay, and the flow is coming from this way, and you want to construct a bridge here, because bridge is the medium, like transportation structure, where if you want, this is a communication structure, actually, like people are leaving this side, they want to communicate with these people. So if we want to go from here to there, there are lots of methods, we can take boats and everything, but bridges are very convenient to flow the traffic very easily. So for that purpose we have to construct bridge. And if we want to construct the bridge, then we have to know, like how, what level or what deck level, like ब्रिज की हाइट हम कितनी रखें इस रिवर के बॉटम से। लाइक रिवर का बॉटम ये है, रिवर का बॉटम का एक एलिवेशन होता है, हम सर्वे में आपको समझाएंगे कि एलिवेशन या आरएल रिड्यूस लेवल क्या होता है। ठीक है, और हम जो है बॉटम के रिड्यूस लेवल, बॉटम के एलिवेशन के हिसाब से डेक का एलिवेशन, ब्रिज के टॉप का या ब्रिज के जो ब्रिज होता है उसका एलिवेशन क्या रखें। तो वो किस पे डिपेंड करता है, एक टर्म होता है एचएफएल, हाई फ्लड लेवल, कि ये देखा जाता है कि पिछले 50 साल में, 50 इयर्स में या 100 इयर्स में इस पॉइंट पे कितना फ्लो जो है आया है। लाइक इन 100 ईयर व्हेन मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस एट एनी टाइम, यहाँ पे लाइक इस रिवर में क्या इनोंडेशन तो हुआ होगा, सब क्या हुआ होगा, फ्लडेड हुआ होगा। तो एट दैट टाइम इस रिवर में क्या लेवल था जो फ्लड होके बह रहा था। तो यहाँ का तो नहीं पता चल सकता, इसके अपस्ट्रीम कोई भी स्ट्रक्चर होगा वहाँ से हम पता कर लेंगे। या वी हैव डिफरेंट मेथड टू कैलकुलेट द एचएफएल लेवल ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फ्लड, अवेलेबल रेनफॉल, बिकॉज इंडिया, इन इंडिया आईएमडी, दिस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आईएमडी क्या करती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करती है कि रेनफॉल को मेजर करती है पूरे कंट्री का। सो दे हैव द डेटा ऑफ रेनफॉल, वी कैन कैलकुलेट। सीडब्ल्यूसी जो है डिस्चार्ज भी मेजर करती है, बट इफ वी डोंट हैव डिस्चार्ज एनी रिवर, देन वी कैन
calculator. There are lots of method. Okay, so now let's go with this subject like hydrology. So hydrology is the science that deals with the occurrence, movement, distribution and properties of the water on earth. Okay, so in hydrology you learn like how water came, like occurrence, like in atmosphere the condensation takes place, and when condensation takes place, the cloud become heavier, then it moves with the with the wind, and at a particular point when it become more heavier, then it falls down in the form of rainfall. And when rainfall comes on the ground, then its movement and its distribution everywhere and its properties on the earth we will learn in this hydrology. So this is the whole idea of hydrology, why we have to learn the hydrology, and these things we have to learn in the hydrology. Okay, in studies water in the atmosphere, surface water and groundwater system. In hydrology we will learn what we learn. We learn water in the atmosphere. Atmosphere में water कैसे move करता है, क्या करता है. When it comes on surface we have to learn surface water, like water comes in the drain, then in the river, then in the ocean, and how it affect to the built up area, how it affect to the agriculture area, and everything we will learn in the hydrology. And groundwater system as well, because this water goes to the ground, underground in the aquifer system. Aquifer means where water is stored in the ground, in the underground system. So these are two types: confined aquifer and confined aquifer, and there is one more, but mainly confined and unconfined aquifer. So we will learn all those things, means we will learn about the water, like natural water, from where it comes, where it go, we will learn all those things. And the third point is hydrology is important in civil engineering for flood control, irrigation, water supply and drainage system. So hydrology is very important in the in to understand the flood. Okay, irrigation, like how much water we have at a particular point. Like if you want to construct a dam. Okay, the purpose of dam, the dam purpose is, first purpose is to for irrigation. Okay, one use is irrigation, second one is electricity. Okay, so this is the main reason when why we need to construct a dam. So when you construct a dam you need to know how much water will come at that point at the dam location. Can you tell me in the comment section why dams are constructed only in hilly areas, not in plain areas, like in Uttar Pradesh, in Kanpur, Allahabad. Why we can't construct dam in these locations? Like in plain area, we can't. This is very tough to construct dam. Why? Why dams are in hilly areas? So you have to answer me in the comment section. Okay, now water supply. So if we have water, surface water, like water supply, you take water from the underground source. Like this is your ground. You dig a well, and this is aquifer. Okay, and you dig in the aquifer, and you take the water, like you dig well, and you insert a screen, and by the mechanical or by electrical pump you extract the water from the pores of soil which is saturated here. So this is, and from where this water came, can you tell me from where this water came? This water came from the rainfall, from the rainfall. Maybe directly from here if this is unconfined aquifer. If this is confined aquifer, there will be somewhere its source is opening. From there it take that rainfall water. So this is underground water you are taking right now. Okay, and the supply water, like if you are not taking this underground water, then definitely the water coming from the river or any source, like source of water is that may be river, that may be pond, that may be lake. So
from where this water came. This water came from hydrological cycle, from the rainfall. Okay, so we take this water from intake structure, then we treat this water, then we supply this water to your tap, to your household. So this is whole mechanism. If we know how much water coming from atmosphere to ground, and how is become runoff to the river, then we can understand how much water we have, and how we can supply, and how we can use the water. So the hydrological cycle, as I explained you, this is a complete cycle. This is a complete cycle. Rainfall takes place, then cloud, like here you can see, here in this clouds, the condensation takes place, precipitation comes, you can say it rainfall. Okay, and then now comes on land, and abstraction in the precipitation takes place, like infiltration, evaporation, everything takes place. Then it become runoff, come to ocean, and from ocean it takes evapotranspiration. So there are lots of term here: evapotranspiration, is evapotranspiration, evaporation, and transpiration. So these things also takes place here. Okay, uh, and why in this image you are seeing like from ocean it is so evaporation? Because ocean is like 70% area on the earth is ocean, or you can say too much area on the earth is ocean area, like water area, water surface is over there. So if we have lots of area which is filled with water, then it means water surface have enough area. So if the evaporation will takes place from the surface. So if surface area is too much, then more evaporation will takes place. Okay, if the pond or the lake or ocean is like this, depth is more, but opening is very less, like top surface area is very less, then less evaporation will takes place from here. So means if area is more, evaporation will be more. So from the ocean, maximum evaporation transpiration will takes place from there. Okay, so now the next thing what is here, like the hydrological cycle is the continuous land and ocean process. Okay, main processes includes evaporation, condensation, infiltration, evaporation, runoff. So runoff is the main thing. Like runoff is equal to precipitation minus losses, you can write. Okay, and it maintains the global water balance. So for global water balance, the hydrological cycle is very important to understand about the hydrological cycle. And now the components of water cycle. Okay, so the components of water cycle is evaporation, as I told you, transpiration. The combination of both is evapotranspiration. If there is a tree, okay, if there is a tree, so a tree is taking water from the ground. Okay, and from the leaves it is transpiration, and the water is evaporating from here, here and everywhere. This is evaporation. So near about the tree, so the whole process, like from here, if water goes upward toward the atmosphere due to the sunlight, the whole process is called evapotranspiration. What is called evapotranspiration? Okay, so this is the basic idea about the evapotranspiration, means evaporation plus transpiration. And next thing is like condensation, cloud formation, precipitation, so infiltration and groundwater recharge. So how groundwater recharge? What is meaning of recharge? Recharge means why it is recharge. We can write it charge only. Why it is recharge? Because we, this is the ground. Suppose this is the ground. We extract. We are continuously extracting the water from the ground. So, and then when rainfall takes place, it goes to the underground aquifers, and then it that's why it is calling recharging. We are recharging it because we are extracting the water continuously. So we are taking from here, then we are giving it to.
So that's why we called it recharging. Okay, so इसलिए इसको recharge बोल रहे हैं. Surface runoff and stream flow. So surface runoff means when water rainfall came on the ground, when rainfall came on the ground, and infiltration starts, and when infiltration capacity fulfill, then water will start roll over the ground, the over land flow, and roll over the ground, and after some time it will goes to the river by slope, so that is called surface runoff and stream flow, we can say that. Okay, so this is about component of the water cycle. Now water balance equation, the very basic equation, water balance equation means how we balance these things, because this is like the same thing, like this much water is coming to the ground, this much going here, this much going here, this much going here, this much going here, so total should be the same as coming from the atmosphere. Okay, so this is the general water balance equation. P is equal to R plus Et plus delta S. Okay, P is the precipitation here, R is the runoff here, Et is the evapotranspiration here, and delta is the change in the storage. Okay, precipitation takes place, then from there evaporation takes place. Okay, transpiration takes place from the trees. Okay, and if comes in any storage, then there is change in the storage, that much water, and these things if we account into it, and this is one is runoff. So when we account all these things, this should be as I said here, that should be equal to this precipitation. Okay, and now these are the basic things, and if you have any query you can comment me. Now engineering application. So what is the application of these hydrology and water cycle in the like uh, in the real life? So flood forecasting and watershed management. Flood forecasting and watershed management, we can forecast the flood, we can forecast the flood. How we can forecast the flood? Like if we have 30 years of rainfall data or runoff data, then we can use methods to forecast in next 50 years how much rainfall or runoff will take place, how much in 100 years, how much runoff or rainfall will takes place. We can forecast it by using methods. And watershed management, if we do that, then we can manage the watershed. What is watershed? First of all, I'm going to explain you what is watershed. A little bit I'm explaining here. Next video I will explain very uh, hide manner. So watershed is the area which is drained by a river. Then whole area we have to manage that, because when we need how much water is coming at how much water is coming at a particular location, then on that basis what the flood will takes place. So if we can analyze, or if we can अंडरस्टैंड, अगर हम जान सकें, समझ सकें कि कितना एरिया इन फ्लड होगा, तो हम इवैक्यूएशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अप्लाई हम कर सकते हैं, जो भी मैनेजमेंट हमको करना हम कर सकते हैं. एंड डिज़ाइन ऑफ डैम्स, इफ़ वी नो दैट, अगर हमको अगर यहाँ डैम बनाना है तो हमको जो है कितना फ्लो यहाँ पे आएगा वो हम निकाल सके तो हम जो है डैम बना सकते हैं. रिजर्वायर कितना एरिया होगा वो हम जान सकते हैं. ड्रेनेज सिस्टम हम सही कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एस्टिमेट कर सकते हैं. ठीक है, ये सब हम कैसे कर सकते हैं, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो. अर्बन स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, एंड वाटर रिसोर्स प्लानिंग एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए हम जो है कदम उठा सकते हैं. सो दीज थिंग्स वी कैन डू इफ वी नो द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, अमाउंट ऑफ वाटर इज कमिंग ऑन द ग्राउंड and coming in the river, then we can do all these things collectively. So that's it for today video. Thank you, see you in next video.